काम करूँगी आ जाती है। ठीक है। यूपी पर 25,000 रुपए जीती हूँ लूडो खेल के। ये देखो, जीता हुआ मनी इंस्टेंटली विड्रॉ भी हो गया। सिर्फ 1 रुपए से लूडो शुरू है। Okay, now we are going to start wind. So wind are there, and that are first is planetary wind. Planetary wind. Okay, these planetary winds are permanent wind. These are permanent wind, and wind blow from high pressure belt to the low pressure belt. High pressure belt to the low pressure belt, and same direction throughout the year. It's go to the same direction also. So as the trade winds tend to blow mainly from the east, they are also known as the tropical easterlies. They are known as the tropical easterlies. So the planetary winds are blow from the high pressure to low pressure. They are the tropical winds, and they are go to the same direction. Easterlies. So easterlies blow from subtropical region. They are blow from the subtropical region towards the equatorial region. Subtropical region towards the equatorial low pressure region, also called the trade winds, and these winds are also called the trade winds. Subtropical to the equatorial, and this is known the trade winds, to blow steadily and constantly in the same direction. So trade winds are the northeastern trade wind and southeastern. Northeastern and southeastern, east की तरफ भी जाती है. Northeastern and southeastern. In the northern hemisphere, trade winds moves away from the subtropical high in the northeast direction, and in the southern it is the subtropical southeast direction. So westerlies wind that move poleward from the subtropical high pressure belt. This is go to the polewards subtropical high pressure belt, and also termed as the anti trade winds due to the direction opposite to the trade winds. So that they are known as the anti trade winds also. So due to the Coriolis force, westerlies in the southern hemisphere are deflected towards the left, and northern hemisphere towards the right, and westerlies blow with the higher force in southern hemisphere than the northern hemisphere, because velocity of the westerlies increase towards the south. It is more stormy. So there is a roaring 40s, that is 40 degree of the latitude, furious 50s, that was 50 degree, and shrinking 60s, that is 60 degree. So roaring, furious and shrinking. Roaring 40s, furious 50s, and the shrinking 60s. These are the anti-trade winds, or we can say westerlies. Now there is a polar winds. These polar winds are easterlies, blow the polar region. These are also easterlies and blow the polar region, and high pressure to the subpolar low pressure belt, and northeast to southwest direction northern hemisphere, and the southeast to northwest direction in the southern hemisphere. So these are all planetary winds. So these winds are the known as the planetary winds. Now after planetary winds, there is a periodic and local winds. Local winds, also called as the periodic wind. So the periodic winds are like monsoon wind. This monsoon wind, the word monsoon have been derived from the Arabic word mosim. This is derived from the mosim, and the wind is reverse their direction with the change of the season, called the monsoon wind. During the summer, the monsoon wind does blow from the sea towards the land. Sea towards the land. In the summer, it is from the sea towards the land, and in the winter from the land towards the sea. Winter, it is blow from the land towards the sea, that is the winter. Okay, and these are the wind are the affect the local weather and confined to the lower level of troposphere, and they are mostly in the troposphere, in the lower level.
So because of that, there is a two type of bridge, like land bridge and sea bridge. So land bridge is sea bridge is the sea bridge being developed shortly before the noon and generally reaches in greatest intensity midday to the afternoon. So that is developed shortly before noon, and formation is differential heat of the land and water. Local low pressure area developed in the land. Sea bridge is the high pressure wind below from the water surface towards the low pressure belt. High pressure belt towards the low pressure belt. And land bridge is during the night. Land bridge is in the night and sea bridge in the daytime. Okay, so land bridge in the night time and air above in the cools and quickly nearby the water body. So this is land bridge is high pressure area which is the sea developed, and wind begins to the from land to the sea. It is from land to the sea, that is the land bridge, and that is sea from the land, that is the sea bridge. Okay, so now sea bridges mostly begins in the noon and the land bridges begin in the night. Next one is mountain bridge and valley bridge. So mountain bridge is the formation of the mountain slope. There is a slopes of the mountain in that is developed and heated into the valley. Pressure becomes low over the slope while the comparatively high into the valley. So gentle wind begins to blow from valley towards the slope. So valley towards the slope, this mountain is, this is the valley. Valley towards the slope, there is a pressure going to be. So this is the mountain bridge, and next one is the, this is the valley bridge, sorry. And mountain bridge is the cold and the dense air mountains are slopes are start moving towards the valley. This is moving towards the valley, that is the mountain bridge, and from the valley, that is the valley bridge. Okay, so pressure begins below the valley, that is called the valley bridge, and if there is a pressure begins the mountain slope, that is called the mountain bridge. After sunset, the rapid radiation takes place on the mountain and high pressure developed more rapidly in the valley, so that is called the mountain bridge. And in the formation of valley bridge, there is a high temperature in the valley, so high temperature, so low pressure, and above the slope there is a high pressure, so that's why that is the valley bridge. Pressure goes from the high pressure to the low pressure. So mountain slope are the heated more than the valley floor, so that is called the valley bridge. And if the valley is the heated more than the mountain, that is called the mountain bridge. We should see the high pressure and the low pressure. These two things are important. If there is a high pressure in the valley, mountain slope is heated more, so high pressure will be in the valley, so that will be the valley bridge. If the high pressure on the slope, that will be the mountain bridge. Now next one is the Lu. Lu is the hot and the dry wind, and it is blow over the northern plains of the India, Pakistan, and from west to east, and they are usually experienced afternoon, and this time is 45 to 50 degrees Celsius. And phone is the temperature of the wind varies from 50 to 20 degree melting snow. Phone makes the land ready for animal grazing. That's why it is important. It is also dusty and the strong warm local wind. Phone. And phone is in the Alps Parvat, that is in Alps. Next is Chinook. Chinook is also hot and dry local wind, and that is in the USA and Canada. So that is Chinook. Chinook in the USA and the Canada. And Mistral is cold dry wind, and that is in the Alps. Mistral in the Alps, and that is cold wind. In the Mediterranean Sea, Rhone Valley, and bring the temperature below freezing level. So what we discussed today, that all was the planetary and the local winds.
Now we are discussing the cyclone. Cyclone air masses with uniform characteristics of temperature, pressure and moisture is necessary for cyclone. Major region forming air masses are the high latitude polar, like this is the 30 degree 60 degree 30 degree 60 degree. This area is the important for cyclone formation. So high latitude polar or low latitude tropical region. First is this polar cyclone and here is the tropical cyclone. These two regions are important to make the cyclone. Okay, so types of air masses are cold polar air masses and warm tropical. This is the warm tropical and this is the cold polar air masses. Okay, so types of front. Now there is a cyclone, so frontogenesis also important. So front are there. So this front are the warm front or cold front. Okay, so warm front air masses moves upward over the cold air masses. It is go upward, and cold front is goes downward to the warm. Okay, so cyclone are the rapid inward circulation of the air masses. It is the inward circulation of the air masses, and that is about the low pressure in the center, and here is the low pressure in the center and high pressure in the outer area. So cyclone are rapid inward circulation. Anticyclone in the northern hemisphere. So there is a anticyclone in the northern hemisphere and is clockwise direction in the southern hemisphere of the cyclone. And temperature or the mid latitude cyclone and tropical or the low latitude cyclone. Two type of cyclone are there. First is the temperate cyclone, which is the mid latitude, and second is the tropical cyclone. This is the low latitude cyclone. Now next is anticyclone. Anticyclone or the spiraling. This is spiraling of the wind and there is a high pressure inner area. So this is anticyclone and clockwise in the northern hemisphere. This is clockwise in the north and anti-clockwise in the southern hemisphere. Okay. So now there is a temperate cyclone. Temperate cyclone are the form along the front of the mid latitude. So this will form along the mid latitude like 65 and 65. Here it will be formed. Okay, and they blow from west to east and are more pronounced in the winter season. They are more pronounced in the winter season. Major region is Atlantic Ocean and the Western Europe. Major region is the Atlantic Ocean and the Europe. And weather conditions, cyclone are drizzling rain. Because of cyclone there is a drizzling of the rain and cloudy sky. And anticyclone is the sunny and calm. Anticyclone is the sunny and calm, and the cold waves are there in the anticyclone, that is calm and sunny. Now tropical cyclone. Tropical cyclone. This tropical cyclone are formed along the zone of confluence of northeast and the southeast radial wind. So this is formed along the trade wind, this 30 to 30. So this is the tropical cyclone, and it is because of intertropical convergence zone, and these are not extensive and have the diameter smaller than temperate cyclone. Diameter is the smaller than temperate cyclone. Major cyclone is Mexico, Pacific Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean southern. Weather condition, no clear warm cold front, no well defined pattern of wind, energized by the conventional current. So they are energized by the conventional current, and these are shallow. These are also shallow current, which are velocity of the wind is weak. High velocity wind are torrential rainfall combined to the destructive storm. Tropical cyclone are not accomplished by the एंटीसाइक्लोन. टेम्परेट में तो एंटीसाइक्लोन होता है, बट ट्रॉपिकल में कभी भी एंटीसाइक्लोन नहीं होता है. So tropical cyclone strike Indian coast in summer and autumn months. Eye of tropical cyclone remains calm. So that is remains calm. That's why it is rainless area. Now next is humidity. Proportion of water vapor varies from 0 to the 4 degree. 0 to the 4 degree Celsius
okay, and that is volume in the atmosphere. The amount of water vapor present in the air affect standing crop favorably. Amount of water vapor is present in the gaseous form in the atmosphere is called the humidity. And humidity increase the degree of dampness of the wetness of air. Absolute humidity is the variable and the change from the place to place. And the capacity of holding water vapor and air increase with the increase in temperature. The temperature in which the given sample of the air become fully saturated is called the dew point. If that is the fully saturated, that will call the dew point or saturation point. Absolute humidity, it is the ratio of the mass of the water vapor actually in the air unit mass. It is including the water vapor and it is expressed in the gram per cubic meter. The ratio of the amount of water in the air at a given temperature is the maximum amount could hold a temperature and expressed in the percentage. Relative humidity is always expressed in the percentage and absolute humidity is in the ratio, and absolute humidity is in the ratio. Okay, so that will be in the ratio absolute humidity, and relative humidity is in percentage. Like relative humidity of an air saturation is 100%, so increase when the temperature of the air decreases and when more moist air is there, so decrease when the temperature is the increases. सो जब भी आपका टेम्परेचर कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी, जबकि रेशियो को देखा जाता है किसमें, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में. सो इंक्लूडिंग द वाटर वेपर एंड इट इज़ एक्सप्रेस इन द ग्राम पर क्यूबिक मीटर. द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर टू द एयर इन द गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. नेक्स्ट है हमारे पास इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन. इवोपरेशन इज़ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस. लिक्विड से ये गैस की तरफ जा रही है, इट इज़ इवोपरेशन. लेटेंट हीट होता है कुछ, दिस इज़ द लेटेंट हीट. सो हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू वेपर एंड वेपर इंटू temperature. So latent heat is consumed in changing water into gases from release when water vapor changes into water ice. Okay, so ice में convert होता है तो latent heat क्या होती है, required होती है. Energy released during the release of latent heat is cause the significant change in weather. So transpiration कब होता है, बताया था plants में, living beings में transpiration होता है. Factor affecting the evaporation is accessibility of water body, temperature, air moisture, wind and cloud cover. ठीक है. कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर चेंज इनटू द वाटर और आइस क्रिस्टल. जब ये वाटर या आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन. द टेम्परेचर ऑफ द एयर फॉल्स इन टू वे. कूलिंग करेंगे, स्मॉल पार्टिकल जितने भी होंगे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज के एटमॉस्फेयर सच ए स्मोक, सॉल्ट, डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट होंगे ड्यू टू राइजिंग ऑफ एयर इनटू द हायर एल्टीट्यूड. ठीक है, सो यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सैचुरेटेड एयर फॉल्स बिलो ड्यू पॉइंट. द एयर के नॉट होल्ड द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी विच इज़ वॉज होल्डिंग अर्लियर हायर टेम्परेचर. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चेंज इनटू द वाटर ड्रॉपलेट और आइस में कन्वर्ट हो जाता है. अब जब भी कंडेंसेशन होगा तो ये होगा ड्यू पॉइंट. जो ड्यू पॉइंट होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जीरो से भी कम वाला जो पॉइंट होता है इसको ड्यू पॉइंट कहते हैं. इसमें फर्स्ट होगा फ्रॉस्ट या होगा स्नो. अदरवाइज़ ड्यू पॉइंट से अबाव अगर होगा, अगर अबाव ड्यू पॉइंट है, जीरो से ज़्यादा है जैसे 1, 2, तो यहाँ पर बनेगा ड्यू या बनेगा मिस्ट या बनेगा फोग या बनेगा स्मोग. स्नो और फ्रॉस्ट जो होता है, स्नो होता है और फ्रॉस्ट जो होता है, ये केवल ड्यू पॉइंट से नीचे ही बनते हैं. Okay, so if you want to go to the snow below dew point, frost is also below dew point. All right, so dew point is a tiny drop of water then form on cool surface at the night and when the atmosphere vapor is condensed. So now favorable conditions क्या होती है ड्यू की. ड्यू के लिए favorable condition है कि clear sky है, little winds हैं, high relative humidity है और cold nights हैं आपकी. प्रोसेस क्या होता है, पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, देन रैपिडली कोल्ड ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दिस ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर ड्यू पॉइंट से बिलो में चला जाएगा. एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होगा दैट विल बी द गेट कंडेंस्ड. फ्रोस्ट क्या होता है,
Frost is a deposition of small white crystal on the ground, and that is below freezing, and condensation of the extra moisture from very minute particle is ice crystal, and that is frost is affect the crop such as the potato and all that. Mist क्या होता है? Mist is the water droplet which is suspended the atmosphere at a near earth surface, and विजिबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग अबाउ 1 किलोमीटर तक आप मिस्ट को देख सकते हैं. फोग क्या होता है? फोग जो होता है वाटर ड्रॉपलेट्स होता है टाइनी एटमॉस्फेयर में बिलो ड्यू पॉइंट्स मतलब अबाउ ड्यू पॉइंट से बनता है ये, एंड दैट इज़ स्ट्रिक्टली रिड्यूसिंग विजिबिलिटी 1 किलोमीटर तक. स्मोक जो होता है वो फोग और हेज दोनों मिलते हैं, डस्ट वगैरह स्मोक, तो स्मोक बन जाता है. स्मोक इज़ फ्रिक्वेंटली ओकर लार्ज सिटी में. क्लाउड जो होते हैं ये लिक्विड और सॉलिड वाटर जब एक साथ के लिए मिलते हैं तो 10 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर क्लाउड का वॉल्यूम होता है. वैसे क्लाउड आर विजिबल मास ऑफ द वाटर और आइस पार्टिकल सस्पेंडेड एट द कंसिडरेबल एल्टीट्यूड. कंसिडरेबल एल्टीट्यूड पर जब आप मास ऑफ वाटर एंड आइस पार्टिकल्स को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द क्लाउड्स. ओके, इट इज़ इन एल्टीट्यूड. क्लाउड्स आर इन द एल्टीट्यूड. नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज़ अबाउट द प्रेसिपिटेशन. सो प्रेसिपिटेशन डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन. सो जब भी प्रेसिपिटेशन होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. एंड ड्रिजल का मतलब क्या होता है? ड्रिजल, सो ड्रिजल इज़ वेरी लाइट रेन, दैट इज़ मिस्ट बट लेस देन शोवर. एंड रेन जो होता है व्हेन द ड्रॉपलेट्स इज 0.5 mm, सो दैट इज़ कॉल्ड द रेन. एंड स्नोफॉल जो होता है प्रेसिपिटेशन फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल, तो इसको स्नोफॉल बोलते हैं. शीट जो होता है, स्लीट इज़ फ्रोजन रेन जो होती है उसको हम स्लीट कहते हैं, ठीक है. एंड दैट इज़ फॉर्म व्हेन द रेन इज़ फॉलिंग ऑन द अर्थ पासिस थ्रू द कोल्ड लेयर. एंड हेल भी होता है, and hail is the precipitation of the ice pellets. If there is a ice pellets, that is called the hail. Now there is the rainfall. First is the conventional rainfall. So conventional rainfall is the common to the equatorial region. This equatorial region is very daily phenomena. Afternoon heating of the earth's surface, tropical region result in the vertical air current. Air current lift to the warm moist and oppose the layer atmosphere. Temperature of humid air start falling below dew point, and now clouds cause heavy rainfall. Okay, next rainfall is the orogenic rainfall. It is also called the mountainous rainfall. Orogenic rainfall is the air rises and cool against the topographic barrier. So region lying the leeward side of the mountain receive less rainfall, and rain shadow region and the other side of the leeward side is called the rain-fed region. So air rises, cools against the topographic barrier, temperature falls below dew point, and clouds are the widespread rain in the slope of mountain, and that is leaving high rainfall. Third is the cyclonic rainfall. This rainfall is tropical region. The vertical lifting and the mixing of opposite air masses with the contrasting temperature is the conventional rainfall. And the two large air masses different density and temperature meets, and warmer moist air mass lifted above the colder one, and the rising warm air mass condenses to the cloud, which is cause the extensive dew point downpour. And frontal rainfall is associated with the thunder, lightning in the whole day or night. Now distribution of the precipitation. See, land receive lesser amount of the rainfall. This is the area. So here the land area receive the less amount of the precipitation, and the sea areas receive the more amount of the precipitation. Precipitation is decreased from equatorial towards the pole. If we are going towards the pole, precipitation will be decreased. And coastal area adjacent to the cold current are drier than coastal area near to the warm current. If there is a cold area of the coastal, that will receive more rainfall, and the warm area will receive less rainfall.
Region of the heavy precipitation is 200 centimeter of annual rainfall, that is equatorial coastal region, and coastal region of the temperate zone. These two zones are very like 0 degree and 60 degree. These two regions are very high rainfall. Okay, and eastern coastal region subtropical zone, this is also receive, and coastal region of the warm temperate zone, this is also receive 100 to 200. They are receive 100 to 200. So 30 degree is receiving 100 to 200, but equatorial and the temperate region is receiving more than 200. Now region less precipitation is interior of the tropical zone and eastern interior part of the temperate zone. Interior also receive the less rainfall, that is 50 to 100 centimeter. And region of scanty precipitation is tropical, temperate, cold desert. Desert also receive less rainfall. Rain shadow regions, interior parts of the continents, western margin of the continental along tropics, western margin of the continents along high latitude. Next is the what factor is affecting to the rainfall. So first is the moisture. Moisture means equatorial and tropical region receive heavy rainfall. So equatorial and tropical region, they are receiving heavy rainfall. Coastal area have a moisture more, so coastal area is also receiving high rainfall. Frigid region is very low evaporation, so this frigid region scanty precipitation is there. Wind direction is also from sea to land or land to sea. So land bearing winds are dry. Wind blowing from the higher to the lower latitude will get heated given no rain, but lower to higher latitude will cool down and they will give the rainfall. Ocean currents, like warm ocean currents are moist, so they will give rainfall, but cold current are dry, that's why they are not giving the rainfall. Presence of mountain is also like windward side is given to the rainfall, but leeward side will never provide this rainfall. Pressure belt is also bearing the like area of the low pressure belt. The low pressure belt is 0 degree, that will give the high rainfall, but high pressure belt will not going to give us rainfall. Equatorial region, conventional type of rainfall will be there all over the year. Western part of the temperate lands receive cyclonic and orogenic rainfall. This temperate region is the orogenic and cyclonic rainfall. And Coromandel coast of the India receive precipitation only in winter. So this Coromandel, Tamil Nadu, there is the only in the winter. Now next is the weather and climate. Weather is the state of atmosphere at a particular place and time influenced by the interaction of the element of temperature, pressure, wind, humidity and heat. Weather is expressed as a sunny, hot and warm, cold based on the atmospheric condition. Weather change very often. A place can be experienced different type of weather. The weather is some location which is some long period of time called the climate. If weather is a long time, then it will call the climate. So average of this weather condition is calculated from data collected several years. Climate is region is more or less permanent, but this is permanent, and a place can experience only one type of climate. Now the next one is factor affecting the climate. So latitude. Distance from equator, place near to the equator is the warmer and higher latitude is the colder. Vertical rays, equatorial region are concentrated over small area, they are the higher latitude. Lower latitude receive higher temperature as a vertical rays are directly come to the atmosphere, that's why this is receiving the higher temperature. Altitude, the temperature decreases with the altitude. As we are going to the altitude, temperature will be decreasing. Distance from the sea, near to sea there is a cold temperature. If you are going to the distance from the sea, there will be the warm temperature. Interior region of the continent, there is extreme temperature. The place far from the sea, that is the low temperature. Prevailing wind like onshore or offshore wind also affecting the rainfall and the temperature.
Indian monsoon is onshore summer monsoon and offshore winter monsoon. Okay. Cloud cover, region with the cloudness sky, they are the higher range of temperature, but region with the cloudy sky experience the small range of temperature. So cloudless sky means high range of temperature. अब क्लाउड होंगे तो लो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा. ओशियन करंट, जैसे कि वार्म ओशियन करंट से वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, और लो जो कोल्ड ओशियन करंट होंगी उससे वहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा. आस्पेक्ट, माउंटेन स्लोप होते हैं जैसे, तो जो लीवर साइड होगा वहाँ पर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जबकि विंड साइड होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा. जेंटल स्लोप में क्या होता है, हमेशा टेम्परेचर रेस हो जाता है, और स्टीपर स्लोप में टेम्परेचर कम हो जाता है. ठीक है, जेंटल स्लोप होगा तो टेम्परेचर रेस होगा. नेचर ऑफ द सॉइल, जैसे कि सैंडी सॉइल होगी तो वहाँ पर क्या होगा, हीट ज़्यादा होगी, एंड अगर डिज़र्ट सॉइल हो तो ज़्यादा ही हॉट हो जाएगा. बट एलुवियन सॉइल होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाएगा. वेजिटेबल कवर, जैसे कि री रेडिएट करता है वेजिटेबल तो टेम्परेचर कम हो जाएगा. फॉरेस्ट एरिया की वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा. माउंटेन चेन्स होंगी बहुत सारी तो उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाएगा. जैसे हिमालय है, सो मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स आर देयर, सो इन द तिब्बतन एरिया, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इज़ लो देयर. पोलर कोल्ड विंड्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू लोअर द टेम्परेचर. नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट टाइप्स. सो कोपेन जो था, कोपेन, उसके बाद कोपेन ने कुछ क्लाइमेट्स के बारे में बताया था. मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज़ डेवलप्ड बाय द व्लादिमीर कोपेन. इसका नाम है व्लादिमीर पुतिन की तरह ही व्लादिमीर कोपेन. इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लाइमेट फैक्टर एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन. इसने 30 टाइप्स ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन बताए हैं. ह्यूमिड क्लाइमेट होता है जिसमें कि हम A, B, C, D एंड E को देख सकते हैं, और ड्राई क्लाइमेट होता है जिसमें हम ओनली B को देखते हैं. ठीक है, A, C, D, E एंड B. सो सम सीजन्स आर गिवन हेयर, लाइक F जो होता है दैट इज़ नो ड्राई, M जो होता है मानसून टाइप, W विंटर ड्राई सीज़न, और S जो है समर ड्राई सीज़न. ठीक है, अब इसने हमें बताया कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट AF बोलते हैं, ये होता है अमेजन रीजन, वेस्टर्न इक्वेटोरियल रीजन और आइसलैंड ऑफ द इंडिया. और जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे यूनिफॉर्मली हाई होता है, टेम्परेचर 30 डिग्री तक होता है. वेजिटेशन भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन पाई जाती है. फिर इसने कहा सवाना रीजन. सवाना रीजन जो होता है यहाँ पे एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा ही होता है, और वेट सीज़न इज़ शॉर्ट, मतलब शॉर्ट होता है. ड्राई सीज़न लॉन्गर होता है. टेम्परेचर इज़ हाई थ्रू आउट द ईयर, और डायurnal रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ ग्रेटेस्ट. वेजिटेशन डेसिडुअस होगी, ट्री शेड करते हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ऐसा होता है. मॉनसून क्लाइमेट जो होता है दैट इज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है. ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न अमेरिका एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया. ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न अमेरिका एंड नॉर्दर्न अमेरिका. ठीक है, हैवी रेनफॉल इन द समर एंड बट ड्राई इन द विंटर. हैवी इन द समर एंड द ड्राई इन द विंटर. So that is known as the monsoon type, heavy in the summer and the dry in the winter. Now dry climate. ड्राई क्लाइमेट जो होता है, एक तो होता है डिज़र्ट क्लाइमेट और एक होता है स्टेपी क्लाइमेट. ठीक है, डिज़र्ट क्लाइमेट जो होता है दैट इज़ नियर टू द इक्वेटर. सब्सिडेंस होगा एंड इन्वर्जन भी होगा. मैक्सिमम टेम्परेचर जो होगा वेरी हाई. स्टेपी क्लाइमेट जो होता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी रिसीव द स्लाइटली मोर रेनफॉल एंड द ग्लासेस आर द स्टेपी क्लाइमेट जो होता है मोर रेनफॉल दैन द डिज़र्ट. यहाँ पे स्टेपी में क्या होता है, स्लाइटली मोर रेनफॉल दैन डिज़र्ट्स, मतलब डिज़र्ट से थोड़ा ज़्यादा रेनफॉल होता है स्टेपी क्लाइमेट में. ठीक है, नाउ वार्म टेम्परेट होता है जो कि मेडिटेरियन क्लाइमेट होता है. सो मेडिटेरियन क्लाइमेट में हॉट समर होता है और रेनी विंटर होता है. और ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जो होता है दैट इज़ थंडर स्टॉर्म होगा और टेम्परेचर 27 डिग्री तक जाएगा. फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट दैट इज़ द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल.
मरीन वाला जो होता है दैट इज़ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर, विंटर वार्मर, एनुअल डेली रेंज ऑफ द टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन भी होता रहता है यहाँ पे, ठीक है, विंटर में। नाउ टेगा क्लाइमेट होता है एक, टेगा क्लाइमेट, ये टुंड्रा हो गया, वैसे ही यहाँ पे टेगा पाया जाता है। सो टेगा इज़ द मेनली नॉर्दर्न ईस्टर्न एशिया, पोलवर्ड साइड में होता है। मैनी एक्सपीरियंस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट रहता है इसका टेम्परेचर। प्रेसिपिटेशन समर में होता है, एनुअल प्रेसिपिटेशन 12 से 15 सेंटीमीटर। ह्यूमिड कॉन्टिनेंट और द कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होता है जो कि कोल्ड क्लाइमेट होता है। ऑक्योर द पोलवर्ड मरीन वेस्ट कोस्ट ऑफ द क्लाइमेट, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर लार्ज एंड द वेदर चेंजेस होते रहते हैं। टुंड्रा क्लाइमेट में आइसकेप क्लाइमेट भी बोलते हैं जिसको। सो टुंड्रा में वेजिटेशन लो ग्रोइंग होती है, मॉसेस, लाइचन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। रीजन इज़ द परमाफ्रॉस्ट, ओके। वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन डे लाइट्स होती हैं। फाउंड इंटीरियर ऑफ द ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका। टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन होगी। अब लास्ट है हमारा सीज़न का टॉपिक है। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। सीज़न इज़ द पीरियड ऑफ द ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक फीचर। जब क्लाइमेट कन्वर्ट होता है तो ये सीज़न में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब वेदर कन्वर्ट होता है तो क्लाइमेट में, क्लाइमेट कन्वर्ट हो जाता है सीजन्स में। सीज़न ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ द इंक्लाइनेशन, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। 3 चीज़ें होती हैं, एक तो रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन और एक इंक्लाइनेशन। ये 3 चीज़ों की वजह से सीज़न बनता है। समर सोलिस्टिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन, दैट इज़ 21 जून। northern most of the point touching to the Tropic of Cancer. A northern hemisphere experiencing to the incline towards the sun, so northern hemisphere day get longer, and southern hemisphere experience winter in the inclines towards the sun, so the southern hemisphere day gets shorter. That is the summer solstice. ऐसे ही विंटर सोलिस्टिस जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो इक्विनॉक्स होता है, ऑटोमन इक्विनॉक्स होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा, जिसको वर्नल बोलते हैं और ऑटोमन बोलते हैं, ठीक है। नाउ सीजन्स आर इनसिग्निफिकेंट ऑन द नियर ऑफ इक्वेटर ड्यू टू सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ऑसिनिक इन्फ्लुएंस रिड्यूस द सीजनल वेरिएशन। पोलर रीजन जो होता है दैट इज़ लॉन्ग विंटर एंड शॉर्ट समर होता है। वी हैव द 3 सीजन, समर, विंटर एंड रेनी सीजन इन द इंडिया। सो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हमको कोल्ड वेदर सीज़न दिया है जो कि दिसंबर से फरवरी में है। हॉट वेदर सीज़न मार्च से मई के बीच में आता है एंड एडवांस मानसून सीज़न जून से सितंबर के बीच में आता है। और रीट्रीटिंग मानसून जो होता है दैट इज़ अक्टूबर टू नवंबर। और जो कोल्ड वेदर सीज़न होता है दैट इज़ दिसंबर टू फरवरी। एंड हॉट जो होता है मई टू मार्च, मार्च टू मई। एंड कोल्ड वाला जो है जो दिसंबर से फरवरी। सो दिस होल ज्योग्राफी आज ख़त्म हो चुकी है।